Welcome to Delivering the Experience with Umair Khan. In today's episode, I am going to talk about should I invest in marketing or should I invest in improvement of my processes? कि अगर तो मेरे पास ऑप्शन है कि यार मैं दबा दब मार्केटिंग पे पैसा लगाऊं या मैं वही पैसे अगर थोड़ा सा लिमिटेड बजट है मेरा वही पैसे मैं अपनी प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे लगाऊं तो क्यों और कहां पर ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है of course it depends on the kind of business you have, how much cash flow you have. But if you are tight on cash flow and if you are nickeling and diming things, which a lot of businesses have been doing or have had to do because of this COVID situation. So I'm going to talk about that. So let's talk about some marketing aspects. So when I'm spending money on marketing, that is money that I am spending to pull customers. मैं पैसे लगा रहा हूं ताकि लोग मेरे बिजनेस पर आए. ठीक है, अब आने के बाद क्या होगा वो वही सारे प्रोसेसेस हैं. अगर सिर्फ हम एक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं वो मार्केटिंग पर पैसे लगाना, बाकी सब कुछ उसी तरह है. We're just spending money on marketing. Customers will come, they'll see the same status quo, they'll see the same processes, same people, same product, no improvement. But now we have 5 times, 10 times, 15 times more people coming to our business. So we are working with that volume because we are pulling those customers in. We're not doing anything with our product. हम अपने processes के साथ कुछ नहीं कर रहे, हम अपने लोगों की ट्रेनिंग के साथ कुछ नहीं कर रहे. The way they talk to customers, all we're doing is we're just spending money on marketing कि हमारे पास ज्यादा लोग आए. तो उस पे क्या है कि जो end result है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. Why? Because if we spend that money on marketing and people don't show up, we're doing everything the same way. So we already spent that money. Now we're waiting for people to show up. So that's one thing that we need to really consider. Then, as I said, product पे हमने पैसे खर्च नहीं किए, people पे हमने पैसे खर्च नहीं किए और हमने processes पे पैसे खर्च नहीं किए. So we're not really impacting a long-term change. We're going the band-aid route. हम सिर्फ एक बैंडेज लगा रहे हैं पैसे खर्च करके मार्केटिंग पे, जिस तरह फेसबुक का पोस्ट बूस्ट करते हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग ज्यादा हमारे बिजनेस पर आए. फिर उसके बाद जो रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो क्यों नहीं है हमारे कंट्रोल में? क्योंकि हमने पैसे लगा दिए. हमने उमर खान साहब को पैसे दिए कि भाई उमर खान साहब आप ये हमारा जो रेस्टोरेंट है उसको मार्केट करें या हमारी जो वेबसाइट है उसको मार्केट करें या इसके बारे में आप बातचीत करें. ठीक है, उमर खान ने तो पैसे ले लिए, उन्होंने बातचीत भी की, महीने में 2-3 महीने उन्होंने दबादब प्रमोशन की. मगर जब लोग आते हैं और वो कहते हैं यार उमर खान ने तो ऐसी प्रमोशन की थी मगर इधर आके तो ये पता लग रहा है कि सब कुछ उसी तरह कि जिस तरह अफजल महमूद साहब आए थे. उन्होंने मुझे बताया, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी आई डोंट नो अली खान जो रेस्टोरेंट है उधर खाना उसी तरह मिल रहा है. मैं तो गया था ये मार्केटिंग सुन के कि उमर खान ने बोला कि यार आए इधर खाना खाएं, इधर प्रमोशन चल रही है, बफे चल रहा है. मगर अली ने मुझे बताया कि यार कोई प्रमोशन नहीं, कोई बफे नहीं, बस खाना भी वैसे ही है, लोग भी बदतमीजी से बात करते हैं. तो द एंड रिजल्ट इज नॉट इन माय कंट्रोल एज अ बिजनेस ओनर. Yes, there are a lot of benefits of marketing, मगर उस पर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, बाद में जाएंगे, बल्कि किसी और एपिसोड में maybe I'm going to touch base on that when it's a good idea to market. Now we come on the flip side, which is spending money on process improvement. क्यों? सबसे पहली चीज, it's a targeted expense. आपने कस्टमर फीडबैक की बेस पर you have identified a process कि यार खाना तो बड़ा अच्छा है मगर अगर ये लोग जरा तमीज से बात करें तो maybe I'll come back again. ओके, इसकी बुनियाद पर आया हमारी जो सेल्स है पिछले क्वार्टर में 20% रिड्यूस हुई है, कम हुई है. अगर तो हुई है तो ओके, लेट्स फोकस ऑन दैट, लेट्स ट्रेन आवर पीपल, लेट्स गेट समवन involved so they can train our people. I've got 4 people who are customer facing. I've got 2 people who are non-customer facing, but they also impact the customer experience because they go out to deliver stuff. So let's get someone
on board. Let's help these people. Let's help our team with how we talk to our customers. क्योंकि जो 20% dip है हमारे revenue में, that may be the difference between a profit and loss. And that may be the difference between our year-end profit and loss. कि जिसकी बुनियाद पे हमने अगर कहीं और पैसा लगाने हैं तो वो पैसे हमारे पास नहीं आ रहे क्योंकि हमारे 20% कस्टमर कम हो गए हैं. So it's a very targeted approach. किस बेस पर? कस्टमर फीडबैक की बेस पर. प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इस केस में हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यार बड़ी रूडली बात करते हैं, या पिछले कोई 3 हफ्तों से आप को मैसेजेस आ रहे हैं, आपको फीडबैक आ रही है कि यार जो umairkhan.com वेबसाइट है या उमर खान का जो फेसबुक पेज है उस पर जवाब नहीं मिलता हमें. हम कमेंट भी करते हैं, हम कंप्लेन भी करते हैं, रसीद की तस्वीर भी भेजते हैं, बट नो वन रिस्पॉन्ड्स. इट्स लाइक नो वन केयर्स. Well, let's take a look at it. The problem is with our social media. Okay, who is handling social media? मैं खुद सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, या कोई मेरा भाई सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, या कोई एक पार्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट मैंने हायर किया हुआ है, a millennial who is handling that social media. They are very good with social media, but are they good in considering the timely response? So you've got to think about that. So we know what the problem is. Now we have to focus on that targeted problem as opposed to just spending money on marketing, because we might be spending money on marketing with the left hand, but with the right hand, we're actually losing customers or losing repeat customers. So पैसे तो इधर जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, मगर इधर से भी पैसे जा रहे हैं. So हम दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं as opposed to fixing a problem at hand. And then return on investment. हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है, दैट्स इन आवर हैंड. हाउ? कैसे? अब मैंने अगर किसी को $500 दिए या $1000 दिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी शख्स को अपना सोशल मीडिया रिस्पांस सही करने के लिए, सो आई एक्सपेक्ट certain guidelines to be followed. कि उन साहब से, मैंने उन साहिबा से बात की कि okay, this is what we're going to follow. If someone's going to send us a message, we will have a preloaded message that's going to go back to them, and we need to, within 2 hours of that preloaded reply, we're going to take a look at the issue, we're going to resolve that issue, we're going to contact the customer, and we're going to resolve it within 5 hours or 12 hours. So our SLA becomes 12 hours. Okay, so you have that return on investment which is in your hand. पैसे जो मैं खर्च कर रहा हूँ इस फोकस प्रॉब्लम पे, उसकी सोल्यूशन पे, उसका जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है कि इस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा ये जो करेक्टिव एक्शन है. I'm going to implement it. I'm going to see the difference because of this, and then we'll move forward. So as opposed to just throwing money or spending $500 every month on marketing, I am now spending $300 or $400 or even $500, but there is something that we are proactively doing or even reactively doing based on the customer feedback, but we're actually doing something at our end. Here, we're not doing anything. We're just waiting for the customers to come in. तो उधर हम कुछ भी नहीं कर सकते. इस साइड पे हम कम से कम कुछ काम कर रहे हैं. So the return on investment is in our control. So मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केटिंग हमेशा जरूरी नहीं होती या मार्केटिंग हमेशा चाहिए नहीं होती. कब मार्केटिंग पे पैसे लगाने हैं और कब पैसे लगाने हैं अपने लोगों पर, प्रोसेसेस पर, प्रोडक्ट पर, बहुत ही जरूरी. अगर आपका प्रोडक्ट जानदार नहीं है तो दुनिया जहां का पैसा लगा ले, दुनिया जहां के प्रोसेसेस ले आए, दुनिया जहां के लोग ले आए, you are not going to succeed. Eventually you're going to be caught कि यार खाना तो इनका बेकार है, ऐसे जो है ना शशके हैं सिर्फ दुकान के और प्रोसेसेस के. So focused approach on process improvement versus blind marketing. Just some tips that I wanted to share because this has come up recently, actually not recently, for the last few years, and I just thought about doing this. Hope some part of what I mentioned in the last few minutes helped. If it did, please let me know. If it did not, even then, let me know.
because I want to make sure that जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, अगर किसी को इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा पहुँचता है, तो ताकि मुझे पता लगे, ताकि I can continue doing that. Plus, अगर कोई और भी टॉपिक है आपके बिजनेस से रिलेटेड, जिसके बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कंसर्न है, या यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि यार आया मैं काम करूं या ना करूं, प्लीज डू आस्क. Worst case scenario, I may have to get some expert involved. Best case scenario, I may be able to help you otherwise, just by falling back to my experience. So either ways, it's going to be a win-win situation. The only time you're going to lose is if you have a question and you don't ask either people who've actually done it the right way, or people who've actually learned from their own experiences. So the key is to ask that question. All right. That was a lot. I think let's call it a session. आज के लिए इतना काफी है. Delivering the experience with उमर खान के साथ आपके साथ डिस्कस किया हमने आज marketing versus process improvement. उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ हासिल किया होगा. And leave me with your comments, questions. Delivering the experience at gmail.com. Also my YouTube and Instagram. Delivering the experience along with Twitter. I look forward to hearing from you guys. Till next, take very good care of your customers. A word of mouth promotion is way better than actual spending.